बता देने से ठीक। मंत्री जी, ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो 200 बेडेड हॉस्पिटल जो आर के मिशन हॉस्पिटल में जो बनना है उसका मतलब 9,000 लैक्स का स्कीम है, तो उसको पीपी मोड में आर के मिशन का साथ में हम लोग एग्रीमेंट किया है, तो उसका कंस्ट्रक्शन उसी का आर के मिशन का तरफ से ही करेगा। तो इसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन, सर्वे इन्वेस्टिगेशन वो सब हो चुका है और डीपीआर भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। तो उसको हम भी चाहते हम इतना बड़े कैपिटल में एक गवर्नमेंट का तरफ से और एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए टीम्स को सर के। तो इसी कारण से हम लोग का मकसद यही था, यहाँ इतना बड़े कैपिटल सिटी में यहाँ में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, तो इसलिए उसको हम लोग जल्दी से जल्दी जितना हो पाएगा उसको हम लोग जल्दी कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। Gardoniger, start question 45. थैंक यू स्पीकर सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉलोनीज़ में एक एक हाउस होल्ड जो है आपका पीएचई वाटर सप्लाई टैंकी से अलग अलग से कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन होने का वजह से पूरा आपका ड्रेन चौक है, अल्बर्ट चौक है, और बारिश आने से ड्रेन का पानी जो है आपका रास्ता पे आ जाते हैं। तो मैं मंत्री जी से ये जानना था कि उसका दूसरा और कोई टेक्निक या दूसरा मेथड नहीं है कि एक पाइप से एक एक घर को कनेक्शन करने का, ऐसा कुछ अगर प्रोविज़न होता है तो ठीक होना था। ये मेरा क्वेश्चन था और उसका रिप्लाई मुझे मिला और आई एम सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई फर्निश्ड बाय द ऑनरेबल। थैंक यू सर। Question 40, Sri Tapuk Taku. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर ये रिप्लाई जो है क्वेश्चन नंबर 40 रिप्लाई जो सर्टिफाइड है, लेकिन इसलिए मैंने यह क्वेश्चन डाला तो अटेंशन करने के लिए जो हाईवे डिपार्टमेंट है हमारा स्टेट का। तो जैसे ब्रिज तो कंपनी जो है बनाया है, जो सीधे में देखा है कि ख़त्म होने जा रहा है, पर जो तोरू में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है तो अभी तो उसका कुछ कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है, जिसके लिए ये रोड जो है माने सिर्फ हमारा इस कमिंग का नहीं बल्कि इंटायर स्टेट का है। ये आपका तवांग बोमडिला सपोज ऑन वे असम में कभी बंद हो जाता है तो सारा 3 डिस्ट्रिक्ट ये फौज पोटेन होके आपका सपा बया जाता है। तो इसलिए उसका जो ब्रिज को बहुत जल्दी बनाना ज़रूरी है बोल के मैंने ये अटेंशन के लिए क्वेश्चन डाला था। सप्लीमेंट्री कुछ है नहीं है ना? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ है आपका? नहीं वो कब सप्लीमेंट्री मीन्स वो जो उसको इमीडिएट माने स्टेप लेना है ब्रिज को बनाने के लिए, जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है इसके। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40 का सिंह सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है, मगर जो मेंबर का तपक ताकू जी का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ है। दोनों ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन में है और ये सिर्फ ईस्ट कमिंग के लिए नहीं बल्कि वेस्ट कमिंग और तवांग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ रिप्लाई में पार्ट बी में अगर देखा जाए तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, जो ब्रिज तोरू ब्रिज के बारे में जो मेंशन किया गया है, फिलहाल उसका स्टेटस भी पार्ट 1 का ए में सेकंड पैराग्राफ में इसका डिटेल दिया हुआ है। और डिपार्टमेंट का मुताबिक ये जो तोरू ब्रिज जो चेंजेस नंबर भी दिया है इज टारगेटेड टू बी कम्प्लीटेड बाय जून 2022। Start question number 38, Sri Ninong Iring. I think it's a combined question and Haing Mangfi also. Yeah. Honourable Speaker, as per the reply of the Honourable Chief Minister, because he's given it in details, and also it is learned that the report headed by Sri Kaling Tang and the expert committee has already been submitted.
but there has been some delays because some technical reasons. Of course, my younger brother, Mangfi, who himself had moved a resolution on this issue. He will ask the supplementary questions, but I would just like to request the Honorable Chief Minister, as I also, and also I think Tarin Dakpe also will support me in this case, that we were also APCS officers. In fact, we were of the first batch. And if I had still been in service, I would just go, I think, I would have been selection grade or admin grade, one of them. So that lacuna that we have compared to the other states like Assam or in other, they have their own state cadres. So there has to be a specific guideline where people don't have to be circle officers for more than 20 years. It's very, painful. So we have to see some scope for them. Of course, some technical reasons must be there. And there is a lot of major policy changes also to be made. So we are completely in support of the government, but a time frame should be there that yes, we are taking up this case, and especially now because it is the 50 years of the golden jubilee of our naming of Arunachal Pradesh, 36th year of our statehood, and bringing a change also will not do harm, I think, to the government, because it is at par with the other states of Assam or in like in Nagaland or even Manipur and other places. So at least the northeastern states का जो एक policy है, उसके मुताबिक इसको आप हमारा जो cabinet है, आपका नेतृत्व में जो सरकार है, अगर if you can give some provision at least to the circle officers who have been struggling. Otherwise, there won't be any charm for that. So at least we have to give them a privilege of the strategy that we had asked, that we must amend the APCS officers, this career, the promotion cadets. Thank you, sir. आपका सुझाव है ना, ये तो क्वेश्चन नहीं है, सुझाव है आपका. It's a suggest- Any? Answers have already been given. So next question number 33, And Mangshi is there. Sri Nawam Tuki. Do you have some? Sri Nawam Tuki. नहीं पूछ रहे. Honorable Speaker, sir, regarding Star question number 33, I got the reply from Honorable Home Minister. Partially, the main question which I intend to ask was the status of the boundary cases which is pending before the Supreme Court, and I asked the government to furnish the detailed status report from the case. But in this answer, you have said that the matter is pending in the Honorable Supreme Court of India and is sub judice. So may I ask Honorable Home Minister whether, because since it is a sub judice, so that the details could not be able to furnish, or the details can be given in due course of time. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, the stair question number 33 raised by Honorable Member Sri Nawam Tukiji. We have laid on the table of the House the answers of A, B, C. तो इनका जो supplementary जो question raised किया, that is regarding the detail of the process of cases in the Supreme Court. ये एक dispute है
Honorable Speaker, sir, for the information of this August House. ये एक dispute है, perhaps an inherited dispute, since Northeast Frontier track to the Northeast Frontier Agency and then to Union Territory and then to state until now. However, in the year 2007-8, Honorable Supreme Court have constituted a committee, local commission, with former judge of the Supreme Court as the chairman, to be assisted by 2 members. And they had submitted their recommendations to the Honorable Supreme Court in 2014. And accordingly, even the government of Arunachal Pradesh, also in the cabinet decision of 3/3/2015, agreed upon the recommendations made by the local commission. However, the government of Assam did not accept the recommendations of the local commission and they filed a rejoinder to the original suit of number 1 of the 1989. So in view of the Honorable Supreme Court of India decided a regular trial be taken up upon framing of issue. As of now, the cross-examination of Assam side has been completed, and from our side, we also started submitting the affidavits of the witnesses. But however, in between, because of pandemic, we could not continue. But still, we are still continuing now. We have started. However, in the meantime, मैं इस अगस्त को बताना चाहता हूँ कि Honorable Union Minister of Home, Amit Shah ji, he wants the entire sister states of entire northeastern state to live in peace, including the disputes of boundaries, जिसमें हमारा अरुणाचल और असम का भी आता है. उसके with that, our Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu ji के गवर्नमेंट ने 15 जुलाई 2021 को एक कमिटी गठन किया, एक स्टेट लेवल कमिटी गठन किया, हाई पावर मिनिस्ट्रियल कमिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी गठन किया, to find out the ways and means to bring a permanent solution to next issue. And we had exercised long, काफी exercise हुआ है state level में, taking into consideration all the stakeholders, including all the political leaders, political parties, जो 12 district के जो borders है, border district के legislatures है, उनका भी. With that, we have completed the entire exercise, and that was submitted to the state government, and cabinet also have decided. And today itself we are sending all those findings to our counterpart Assam. However, as per your question, जो आपने ये मांगा है, जो detail चाहिए बोला है, if you require the detail, the department is ready to furnish all the details to you. The process was whatever is taken in the Supreme Court. Start question number 18. Sir, Please. so thank you for giving me this opportunity for asking a supplementary question. Because I am also from a border district with Assam. Honorable Home Minister explained in details, and also we also agree to the terms and conditions. But what I would like to bring before you, and I would like to ask the question, is that I myself was a circle officer in these bordering areas, right from Seren, then Dekapam, then to Telam, Tumpo, Aditako, then Name, Depu, Debeng, and Rayang. So similarly, we have a lot of border district, my colleagues. Most of them, it is dormant, it is silent now. But what I would like to say is that, of course, the Arunachal government has very humbly and very patiently agreed to terms and conditions, and we are maintaining the status quo. Sir, if you remember that, we had camps in Siga, that is about 5 kilometers down south of Depul. We had the administrative jurisdiction right up to Takogutung, that is Adi Tako. Mr. Kenterunya must be knowing about that.
And we have areas also along the borders in Hamara Lekhavali, New York, or even with Tarindakpes, and also with Tanahali. We have these issues. Now, Arunachal is agreeing to the terms and conditions, and we are abiding by what the Supreme Court, or as you are saying that it is now sub judice. But the thing is that, Honorable Home Minister, would you please explain that we can always be on the defensive side. We do not want an issue of Nagaland, or we don't want an issue of Mizoram. But when we are silent, the counterpart, because we are NDA here, we are NDA in Assam, and we are in NDA in the center. Now, why is it taking so long to at least where we have as is, where is, that status quo has to be maintained, and we are maintaining it. But you will see that a lot of disturbance in the construction works. Always we see it in the social media. This has to be stopped, and that message should go to our counterparts also. So what is the step that you are taking before this sub judice case is also done, or if at all our tripartite committee will give its decision? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, मैं honorable members नेनो जी को ये बताना चाहता हूँ कि dispute area is ranging somewhere more than 700 kilometers across Assam, comprising of 12 districts out of 25 districts. And जो exercise हम लोग जो कर रहा है to resolve, it is not taking place only in some part. It is taking place the entire states. और मैं आप ये साधन को ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हम लोग एक्सरसाइज किया है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्पेशली डोज इफेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स के लीडरशिप में, तो वहाँ पे हम लोग ने जितने जो वहाँ का लेजिस्लेचर ऑनरेबल मेंबर्स है, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, ऑनरेबल जिला परिषद मेंबर्स है, वहाँ के कम्युनिटी बेस्ड लीडर्स है, वहाँ के यूथ्स है, ये सारा स्टेक होल्डर को मिला के इन लोग सब टीम बन के ये इंटर स्टेट्स में उन लोग जो है जायजा लिया है, और उसी आधार पर और जो भी रिकमेंडेशन आया है, ये जितने जो स्टेक होल्डर्स है इन लोग सब ने लिखा है. और बीच बीच में आपने जो कहा है कि कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटी पे, द डिपार्टमेंट इज वेल अवेयर ऑफ इट, एंड वी आर every time we are taking up the matters with the counterpart, and most of the times it is resolved also. और हम लोग भी चाहते हैं कि वो आगे ऐसा ना हो. So we are taking in the highest level also, we are discussing with the counterpart जो jurisdiction के हो या माने dispute में हो, हम लोग बात करते हैं, and most of the matters have been resolved in amicably till now. तो चुटपुट होता रहता है वो, और बाउंड्री में होते रहते हैं, तो वो हम लोग भी चाहते हैं कि वो ना हो. तो इसी आधार पर I also request to honorable speakers to you that honorable members ये August House से that we all must work together to bring into permanent solution to this vexed issue. Thank you. Start question number 18. JK Tako. हाँ, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर. मेरा ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि अपग्रेडेशन ऑफ सब सेंटर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो सारा प्रोसीड्यूर ने हमारा मंत्री साहब ने दिया हुआ है कि क्या क्या है. तो रूरल एरिया में जहाँ देखा जाए कि जहाँ इंटीरियर एरिया है, तो माइग्रेशन जो है रूरल टू अर्बन का एक 2-3 कारण है. एक है रोड है, एक है एजुकेशन, एक हेल्थ है. 3 कारण से पूरा माइग्रेशन चल रहा है. तो उसमें से रूरल में से हमारा एक एग्जांपल है, हमारा पिपसोरंग सर्कल है कि मेरा कंस्टिट्यूंसी अंडर आता है, जहां अभी तक ताली तक तो रोड नहीं है, तो पिपसोरंग का दूर की बात है, 2 दिन पैदल चलते हैं. वहाँ सब सेंटर चल रहा था. उसे करेक्शन करने के लिए, उसको अपग्रेडेशन करने के मैंने सारा प्रोसीड्यूर को फॉलो किया. लेकिन वहाँ जो कमेटी एक बनाया कि एक कंडीशन दिया है कि 20,000 पॉपुलेशन होना है. तो 20,000 पॉपुलेशन अगर है, वो क्राइटेरिया है, तो हमारा करादादी में नॉट लेस देन 5 PHC है. 20 into 5 होने से 1 लाख होता है. वेयर इज मेरा करादादी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 40,000 है. हाउ इट वाज एप्लीकेबल, ये कैसे हुआ? और मेरा कंस्टिट्यूंसी 15,000 है, तो हमारा वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ताली में. ये मियर एक्सक्यूजिबल है या ये स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
अगर 20,000 एक पीएचसी के लिए चाहिए होता तो सीएचसी के लिए कितना चाहिए हो, वो भी बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए कितना चाहिए होता है, जनरल अस्पताल कितना चाहिए होता है, वो अगर इसको सारा को मिला के अरुणाचल का इंटर अरुणाचल पॉपुलेशन को डिवीजन कीजिए, इसमें एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो हमारा एक इंटीरियर सर्कल हेडक्वार्टर को डिनाई करने का एक बहाना है, ये क्लियरिफाई कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में हम बहुत सा पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर है, वो ऑलरेडी डिपांक भी हो गया है, उसको ऑलरेडी हम ये में भी पार्निश किया है। तो ये बात नहीं, अरुणाचल प्रदेश में अंडरस्टैंडिंग में हम लोग दूर दराज इलाका का कारण से, टोपोग्राफी उसी का कारण से हम सब जगह में, सब कॉन्स्टिट्यूंसी में सब सेंटर खुलाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो सब एस्टेब्लिश है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में खुद हम सब ने ही गलती कर रहे हैं। हम अपना इंटरेस्ट के लिए कहीं में सब सेंटर करेगा, कहीं में ये करेगा, ऐसा हम नहीं होने। इसी कारण से आप लास्ट कल हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है, हम एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अच्छा सब सेंटर या पीएचसी एक ये करना है, उसी में सब फैसिलिटी मिलना है। तो उसके लिए जितना भी सब सेंटर हो, जितना भी वो पीएचसी हो, मैं और रिविजिट करना चाहूँगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अननेसेसरी सब जगह में कहीं कहीं में विदाउट रिक्वायरमेंट खुला है, तो उसी में हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी तकलीफ होता है और उसमें हम अच्छा बेस्ट फैसिलिटी भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम एरिया को देख के जहाँ में जेन्युइन है उसको मैं जितना भी विधायक को उसको अनुरोध करना चाहूँगा, आप अपना अपने एरिया में कितना पीएचसी होना है, कितना सब सेंटर होना है, खुद अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में डिटरमाइन करके ये नीड बेस में आप अभी टेकअप करना है। क्योंकि हम इतना सब सेंटर खुला है, इतना पीएचसी खुला है, वो दिपांग पड़ा है, ना ह्यूमन रिसोर्स है, ना बिल्डिंग है, ऐसा है। तो इसलिए जहाँ में हम पीएचसी खुलने से भी, सब सेंटर खुलने से भी, कहीं भी होने से उस इंस्टीट्यूशन में हमारा पब्लिक को बेनिफिट मिलना पड़ेगा, उस इंस्टीट्यूशन को हम अच्छा से चलाना चाहिए। तो इसी कारण से मैं थोड़ा हमारा अरुणाचल प्रदेश का हेल्थ जो इंडिकेटर है उसी कारण से भी बहुत डाउन हो रहा है। तो इसलिए जहाँ में जरूरी है एज पर नीड बेस, वहाँ हम लोग ये क्रिएशन करना है और वहाँ उसको हम लोग चलाना चाहिए, मेन पावर भी हो और जो भी हो फैसिलिटी वहाँ मिलना चाहिए। हम सिर्फ नेम सेक में खुलने से नहीं होता है, वही है मेरा मकसद। इसी को मैं आपको रिपोर्ट किया है या मैं ऑनरेबल स्पीकर को, क्योंकि आईपीएस जो नॉर्म्स में जाने से हम अरुणाचल प्रदेश में इतना नहीं मिलता है, फिर भी उसको नज़रअंदाज रख के हमारा एरिया का मुताबिक, हमारा पब्लिक का मुताबिक, जैसा आपने बॉर्डर एरिया को भी मेंशन किया, उसी मुताबिक उसके हम लोग नीड बेस पे इवन 200-300 में ऐसा गांव, ये गांव में भी हम लोग खुल रहा है। तो फिर भी जहाँ में जेन्युइन है, जरूर है, वो तो जरूर है। तो इसलिए मेरा कहना यही है। थैंक यू सर। स्टार्ट क्वेश्चन 61 श्री कारिकोकरी। स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर का जो जवाब है संतोषजनक है, तो उसमें फाइनेंशियल मैटर में तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी जो मेजर्स है उसमें थोड़ा सा हम सप्लीमेंट करना चाहेगा। इसमें ये था दो मुद्दा था, एक तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोन एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, APFSA in the state, situated in police training center at PTC बंडरदुआ। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, स्पीकर साहब आपका माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर को और हाउस को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये कोई भी पेडलर्स वगैरह अरेस्ट होता है तो क्या होता है, 90 डेज़ का रिमांड होता है। तो 90 डेज़ का रिमांड होता है तो फोरेंसिक लैब से जो भी रिजल्ट्स वगैरह जो पॉकेट से निकला है, तो ये कोकिन है, ब्राउन शुगर है, तो कोई बता नहीं सकता है, ये लाइम पे लगेगा, कोई चीज़ पे लगेगा, तो टेस्ट करने के लिए बंडरदुआ जाता है। तो बंडरदुआ जाता है तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, उसके बाद में 90 डेज़ ओवर हो जाता है, जो कॉर्पोरेट है, पेडलर है, फिर रिलीज़ हो जाता है। तो इसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से, ऑनरेबल मिनिस्टर से मैं सर आपका माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हो सकने से ईस्टर्न सेट में हम लोग का तिराप, चांगलांग, लोहित, दिवांग या पासीघाट सेट में एक फॉरेंसिक लैब एक्ट हम लोग इस्टेब्लिश कर देने से
बहुत अच्छा था ब्रांच सेक्टर कर देने से। ये एक तो हमारा मुद्दा था। सेकेंडली, लॉ एनफोर्सिंग पर्सनस whosoever he or she may be, कोई भी हो, इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। जो लॉ कीपर्स है वो लोग इन्वॉल्व है डायरेक्टली। उसके बाद में क्या होता है, उनका साथ में हम लोग अपना आँख से देखता है, इस जगह में पेडलर बैठा है, हम भी जानते हैं, उन लोग भी जानते हैं, सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है। क्यों आ रहा है? कोई किसी को पकड़ा भी नहीं है, लेकिन डेली उस घर में विजिट हो रहा है। किस लिए विजिट कर रहे हैं पुलिस लोग? क्यों आ रहा है? यहाँ नेक्सस है, यहाँ में मिला हुआ ये लोग। इसलिए मैं अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ऑफिसर्स है इन पुलिस स्टेशन और इन्हीं कोई भी इंपॉर्टेंट टेबल में है, पोजीशन में है, दे शुड रिसफल, मतलब कुछ टाइम में रिसफल करना पड़ेगा ये लोग को। नहीं तो क्या होता है, उनको सब कुछ भीतर का बात मालूम है, लेकिन उसका अरेस्ट होता नहीं है, कॉर्पोरेट के पीछे हम लोग भागता नहीं। इसलिए ऑनरेबल मिनिस्टर, स्पीकर सर, आपका माध्यम से मैं ये आपका जो जवाब आपने दिया फाइनेंशियल मैटर एप्रिसिएबल है, अच्छा से आप पैसा दिया हुआ है उधर में डी एडिक्शन चलाने के लिए, और ये 2 पॉइंट को हम आपका सामने रखता है। मैं आपका मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो इसमें आई थिंक 2 ministries are involved, ना, the supplementary. So I think Health Minister will reply first. Honorable Speaker sir, ये जो ड्रग मीनेंस का और ड्रग सब्सटेंस एब्यूज़ का, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत गंभीर ये है सिचुएशन है अभी। इसी से हमारा यंग जनरेशन का मतलब फ्यूचर टोटली बिल्कुल डार्क है। तो इसलिए ये ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन किया है, उसके लिए मैं रियली वेलकम, और सारा सदन से भी अनुरोध करना चाहूँगा, हम सब इसी के लिए पार्टिसिपेट, हम सब ही कुछ पार्टिसिपेट करना। ये forensic lab is pertaining to the health ministry or home? आपका अंदर आता है forensic lab? हो जाएगा सर। नहीं, आपके अंदर आता है। नहीं सर, वो तो मेरा ये में नहीं है, फिर भी Then I think Minister Home should reply. It's under Home Ministry, ना, forensic lab. फोरेंसिक का होम का है सर। तो इसलिए मैं वन उसको हम सब रिप्लाई दे देगा, जो फिर उसको भी सर ने काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको होम मिनिस्टर को रियली थैंक यू देना चाहूँगा। इसी कारण से वो खुद अपना डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स को भी बर्खास्त कर रहे हैं, अपना डिपार्टमेंट का फोर्स को भी वो एक एक्शन ले रहा है, जेल में डाल रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा ये स्टेप ले रहा है। तो ये दोनों अभी सर का जो क्वेश्चन है उसको हमारा होम मिनिस्टर ही आंसर देने से ठीक है। थैंक यू सर। Home Minister, please. The answer to the supplementary question. Why is it taking so long for the reports to come and other? It's like No, shuffling as of the- now, actually, we are, though we have a forensic laboratory, however, it is not fully established, and we are on the process. Actually, it is already on the process. Till now, as of now, we are sending to some other state. तो जहाँ में इन लोग देने में हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो आई थिंक इन a couple of years from now, we will have our full-fledged forensic laboratory in our own state. तो इसलिए का कारण से शायद उसको इसका कारण से ये डिले होता है कभी कभी रिपोर्ट आने में। और जहाँ तक कि जो आपने कहा है कि जो हमारा पुलिस वाला जो है जो पेडलर लोग को पकड़ने में, मैं आपको पूरा ये आज तो मैं हाउस में नहीं ला पाया, लेकिन इफ़ यू डिज़ायर वी आर गोइंग टू गिव यू इन द लास्ट अराउंड 1.5 years वी हैव आवर पुलिस हैव एक्सरसाइज, इतने फेडलर्स लोग को पकड़ा है कि इतना जो सब्सटेंस को हम लोग ने सीज किया है, तो उसका क्वांटिटी जितना है आपको हम लोग सप्लाई, आप लोग देख लीजिएगा, आपको दे देंगे। तो आवर पुलिस आर डूइंग वंडरफुल जॉब, स्पेशली इन नेविंग दी पेडलर्स लोग को नेव करने में। लेकिन उसका जहाँ तक जो उसका बेल आउट होता है, अरेस्ट होने के बाद में दे आर बीन प्रोड्यूस इन द कोर्ट, it is court who decide whether they are to be given granted bail or not. Thank you, Speaker. Even I have a supplementary question. The forensic lab which he is talking about is getting delayed due to some technical reason or financial reason? No, it is yet to be fully established. We have not, though it is functioning there, but जो हम लोग को होना चाहिए था वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है, जिसका हम लोग जो है प्रपोजल दे चुका है। तो इन आने वाला मैं बता रहा हूँ कि उसका टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मेन पावर ट्रेन वाला भी चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग का अपना जो पुलिस स्टैब्लिश वाला एक फोरेंसिक लेबोरेटरी बन जाएगा, होपफुली वेरी सून। So, question number 10, Sri Ninong Ering.
Honorable Speaker, sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister ये Fisheries. आपका सियांग है ना ईस्ट सियांग है? Yes, that's what I'm saying, sir. There has been a typo mistake. When I said Siang means all the Siang, upper Siang, अच्छा, entire Siang, basin. East Siang, Siang, and lower Siang. So these areas are very ideal for pisciculture. As you have personally also been to Pasighat and even to a place in Miram where I had requested you that this project must be taken up, and like you have done that in Zero. So that is an exemplary piece of work that you have done. They have created a tourist destination and also something like Wad's Lake in Shillong. So similarly, on that same basis, I would like to tell you that the whole belt of mine, let it be in Ledum, Miram, or even in the down south, Sikabam, Sikatode, and all those areas, or even if you go to Pangin Boleng, or even to Nari area, or to Lumpo area, not Lumpo, but Nari and then Seren side, you will find that a lot of scope is there for organic fishing. So my request to you, and my question to you is that, of course, I'm just adding those other districts, but what steps are you going to take to develop the pisciculture, or the especially my main intention hai, that was in Miram village. What kind of step would you like to take to bring not only the fish farmers, but also to develop it as a tourist destination? One, sir. And the second is that, very unfortunately, due to the COVID, you know the problem. A lot of farmers, fish farmers, who had done who had dug the construction of the fish ponds, have still not got their money. So if your kind self would, through you, sir, Honorable Speaker, I would request that if you can make provisions so those farmers are not denied of the work that they had done. Thank you, sir. Honorable Speaker, मैं आपको माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स को बताना चाहता हूं कि स्लाइटली आपका क्वेश्चन करने में हमें भी कंफ्यूज हुआ और आपको भी कंफ्यूज हुआ। डाइवर्ट हो गया। आपने कहा कि सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी जवाब मैंने लिखा वो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द सियांग डिस्ट्रिक्ट ही मैंने लिखा। तो आप चाहता है कि सारा सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, दैट मीन्स इट्स बिकम ए सियांग बेसिन। तो आपने सही फरमाया सर कि सियांग बेसिन हैज गॉट ए लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर द पीस डेवलपमेंट। आई डू एक्सेप्ट दैट, एंड उसी का तहत हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आजकल सिर्फ एक ही हेड है जहां पर हम पीस डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसका गाइडलाइन के तहत हम लोग को बहुत बड़ा पीस पॉन्ड डेवलपमेंट का ज़्यादा नहीं है। उसमें ज़्यादातर पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का बहुत प्रावधान दिया हुआ है, जो कि हम अपना स्टेट में इम्प्लीमेंट करने का जगह नहीं मिल रहा है ना। जो भी प्रावधान हमारा PMMSY में है, साल को जो मिलता है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा के हिसाब से हम पीस पॉन्ड एरिया एक्सपेंशन के लिए हम दे रहे हैं अभी, दो इट इज़ वेरी मच इनएडिक्वेट, आई डू फील इट। लेकिन इसको अगर हम करना होगा तो सेपरेट प्रोजेक्ट कहाँ से मूव करना है, हम सब मिलके ही करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आप जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाहता है लेक टाइप का पीस डेवलपमेंट जहाँ से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पीसेस कैन बी डेवलप, उसी का ही आप ढूंढ रहे हैं। इसके लिए हमारा फिशरी डिपार्टमेंट सिर्फ सक्षम नहीं है, इसमें आपको WRD एंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा।
फॉर क्रिएशन ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनी सबसे पहले आप वाटर कंजर्वेशन का हिसाब से लेक डेवलप कर लीजिए, देन उसका बाद में हम फिशरी डिपार्टमेंट उसमें एड ऑफ करेंगे कि हम इसमें कैसा मल्टीपल यूज लाया जा सकता है, फिश हम कौन सा तरीका से लाया जा सकता है वो हम करेंगे। तो फिश जितना भी है अरुणाचल में आज तक जो फिश हम लोग ने पालते हैं ऑल आर ऑर्गेनिक, फिश में इनऑर्गेनिक का सवाल नहीं है। क्यों नहीं है, मेरा कहने का मतलब है जैसा वेजिटेबल्स में आप अदर्स फर्टिलाइजर वगैरह जो यूज़ करते हैं इसमें ऐसा नहीं है। फिश फीड इटसेल्फ इज ए ऑर्गेनिक, इट इज ए compositions ऑफ मेज, राइस, ऑयल केक, and these three components are naturally organic। तो जितना फिश पाल रहा है वो ऑर्गेनिक है। अनदर आपका सियान बेसिन्स में हम लोग का स्कोप है फिश का, जो ट्रॉट फिश के लिए हम एक्सप्लोर कर सकता है, जिसमें कि हमको ठंडा पानी का जरूरत पड़ता है। ट्रॉट फिश इज नेचुरली ग्रो बिलो 18 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन समर सीजन। तो उसको देखने से आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी स्कोप है, लाइक अपर सियांग जुरिडिक्शंस में कई जगह है। उसके लिए हम लोग ने कोल्ड वाटर फिश डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश एंड अदर पार्ट को भी हम लोग लाइसेंस करके रखा हुआ है। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एट मेचुका इन द सीड प्रोडक्शन एंड अदर फार्मिंग को हिसाब से, एंड तावांग बोमदिला वी आर डूइंग इट, वहाँ से अभी फिंगरलिंग्स भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये एंड स्लो फेज में हम लोग आने वाला इस साल और 2023 तक का कुछ जगह में देखने का विजिबली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विजिबली हम लोग ने ट्रॉट फिश प्रोडक्शन को भी ये करेंगे। एंड अनदर इशू आपका पासीघाट एंड ओ बिलो आपका केरंग, ये जो लोअर बेल्ट में वी कैन गो फॉर महासिर प्रोडक्शंस, जो कि वो भी हमारा इंडिजिनस फिश है, उसका भी डेवलपमेंट अभी सही नहीं हो रहा है। जितना पुराना पाम्स था मेरा लास्ट 2-10 ईयर्स में सबको अपग्रेड करने का कोशिश कर रहा है। आपका सियांग बेल्ट में स्कोप है और उस स्कोप के हिसाब से हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं, कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। पैसा नहीं दिया सर वो जो पिछले साल आपका पिस्पोन में के लिए हम लोग कुछ एलोकेशन दिया था, वो एलोकेशंस मार्च एंडिंग का वजह से लास्ट मोमेंट में दिया है। अनफॉर्चुनेटली दैट फंड वाज सरेंडर। तो वो फंड सरेंडरिंग को हमने फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में कोशिश कर रहे हैं कि उसको हमको री एलोकेट करें ताकि वो फार्मर्स लोग को मैं दे दूं। अभी भी कोशिश है सर, हम लोग शायद मिल जाएगा। Question 46, Sri Wangling Luangdong. Thank you, Speaker, sir. My question, start number 46. In regard to the Wangcha Rajkumar Government College in Diomali. I'm not entirely satisfied with the reply given by Honorable Minister. Wangcha Rajkumar Government College, Diomali Tirap district, has seen 25 years of its existence. It started functioning in July 1997, and this year, in July, we'll be celebrating the Silver Jubilee year. The fund allocated to this college, very important college, catering to the students of two districts of Tirap and Longding, is very minuscule and does not reflect in the ground reality. 25 years of the college's existence in Tirap district has seen no library, no auditorium, no administrative block, no proper hostels for boys and girls, no interlink road within the college campus, no drinking water, no playground, and to cap it all,
In the 3 years, 9 faculty members have been transferred with the replacement of only 1, that is in English. And also, the reply also states that all the departments are functioning except science. I did not ask for science section. It's not a science college, it's an art college. In 2017, 2 different new departments were created. One education and one the commerce section. Commerce has started, is functioning, but the education branch is yet to function. So when will that also function? And moreover, the principal, the head of the institution, whoever it may be, either he or she, must give due cognizance and importance to the education department in which he or she is being placed. Now, herein lies the problem. The college principal that are posted in the WRGC college are mostly in charge. So the in charge person will not be able to give due importance to the college in its performance. The in charge principal often does not stay in the particular college campus and is most of the time off duty. He will come only when there is a college week or some important function. That is the way in which the college institution has been running all these years. Now, whether the government or especially the education department is interested to promote higher education in Tirap district, catering to the students of 2 districts of Tirap and Longning. What is the intention? And why, after a gap of 25 years, some semblance of development and process cannot be initiated? I would like a reply. Honourable Minister. Honourable Speaker, sir, is the question number 46 by Sri Wangling Longdong, Honourable MLA, and reply has been laid in the table, and the supplementaries asked by the Honourable MLAs. सर, सबसे मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि हमारी पूरे अरुणाचल में 19 कॉलेजेस है, और इस 19 कॉलेज जो हमने बनाया है, जितने भी कॉलेज बनाया उसमें पूरी हमारे आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स, जो हमारे जो यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें जो फैकल्टी मेंबर्स बनाना है, होना चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारे जो 19 कॉलेज बहुत बढ़िया से चल रहा है, ताकि मिनिमम जो हमारे रिसोर्स फैकल्टी मेंबर है, अभी हमारे ऑनरेबल एमएलए ने पूछा कि 9 फैकल्टी मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया, सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट दिया है। मैं आपकी ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके माध्यम के से मैं इस हाउस को बताना चाहूँगा कि हमारे जो 6 मॉडल कॉलेज बनाया गया है बाद में, जो हमारे मॉडल कॉलेज हमारी दर्जे खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग, तादर तांजंग गवर्नमेंट कॉलेज नापिन, गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज पालिन, पासर, रोइंग, गेकू, ये जितने भी हमारे जो मॉडल कॉलेज बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम थोड़ा बहुत डेवलप किया है, लेकिन इसके लिए अभी तक हमारे फैकल्टी मेंबर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जो जहाँ हमारे सैंक्शन फैकल्टी मेंबर है, उसको लेके हम बाकी कॉलेजेस में लेके गया है। इसलिए हमारे जो फैकल्टी मेंबर हमें एज पर यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से कहा जाए तो हमें 953 की फैकल्टी मेंबर चाहिए, लेकिन आज एज ऑन टुडे हमारे पास 494 फैकल्टी मेंबर है, क्योंकि यह हमारा अपने रिसोर्स के साथ हमको चलना पड़ेगा। अपने 2 सालों में तो हमारा कोविड की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन इस साल हमारे आने वाले समय में हम और फैकल्टी मेंबर इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। जब जब फैकल्टी मेंबर इंक्रीज़ होगा, उसमें हम वंशा राजकुमार को भी हम दिया जाएगा कॉलेज में। और कहा हमारी 2 डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, एक तो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन के, कॉमर्स के बिल्कुल चल रहा है,
एजुकेशन की हमारे स्ट्रीम इसलिए हम चल नहीं पा रहे कि हमारे फैकल्टी मेंबर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। जैसे हमारे फैकल्टी मेंबर उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे एजुकेशन के आ जाएगा तो हम उसको फैकल्टी को हम शुरू करेंगे। और रहा बात हमारी दूसरी कहा कि प्रिंसिपल जो इंचार्ज में है, अब तक हमारे जो प्रिंसिपल वंशा राजकुमार में जो प्रिंसिपल था वो रेगुलर प्रिंसिपल था। हमारे उसको उसका मेडिकल ग्राउंड के वजह से उसको पासीघाट में ट्रांसफर किया गया है और उसके बदले में हमारी जो सीनियर मोस्ट जो प्रिंसिपल इंचार्ज ड्राइंग को वहाँ हम वंशा राजकुमार में भेजा गया है। तो अगर वो प्रिंसिपल अगर स्टेशन में नहीं रखता है, अगर कोई रिपोर्ट मुझे आ जाता है तो डिपार्टमेंट इसके लिए एक्शन लेने के तैयार है, क्योंकि हम जब भी कोई फैकल्टी मेंबर या प्रिंसिपल को भेजता है वह स्टेशन पर रखना है और वहाँ फंक्शन करना पड़ेगा। और आज तक हमें जैसे कोई रिपोर्ट नहीं मिला कि वह प्रिंसिपल वहाँ नहीं रखता है। इसलिए मैं जितना भी और कहा कि 25 सालों में इस वंशा राजकुमार के लिए कुछ नहीं किया। सर मैं आप सदन के बताना चाहूँ कि आई थिंक वन ऑफ द आज के तौर में जितने भी रिसोर्सेस है जो यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे वंशा राजकुमार कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। और उसमें हमारा ऑडिटोरियम चल रहा है। हम इस साल हम ऑडिटोरियम के सैंक्शन दिया है, हमारे प्ले ग्राउंड के सैंक्शन दिया है। जो बेसिक चीज़ एक कॉलेज को दरकार है इस पर यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से सर हमने दिया है। थैंक यू सर। I have one more supplementary, Honorable Speaker, sir. There are two ways in looking at solving a problem. Either to look away and see that everything is honky-dory, and the other way is you take decisive action. Now, in regard to the development in the college, what Honourable Minister is saying that he will do it. As far the answer is that he's earmarked some amount for the fund and the auditorium. 25 years of existence should have seen a playground. 25 years of the existence of its college should have seen an auditorium or an assembly hall where the students could gather together for the assembly session or any function it may be, however small or big. Most of the functions in the college, I've seen it myself, is celebrated outside. So these are the things that is going on. And regard to the presence of the principals, all the principals who have been posted there, not all, most of them, do not tend to stay in the location. Now there's something very wrong. The department does not necessarily need always complaints. They should also initiate some proceedings and look out for themselves whether such principal is really residing in the campus or not, whether he is performing his duties or not. These are the simple things that the department should initiate. You don't need a complaint all the time from somewhere or somebody to initiate the process of action. And higher education is very important. Arunachal must give emphasis to the higher education. And if there are lesser, what you call, faculty members, process should be initiated to create those faculties. And as I have said also, today, this year will be the Silver Jubilee year. Something special occasion should be, should be there, some function also. What the minister is contemplating to give during this Silver Jubilee year of the college. What is the exact supplementary? Honorable Speaker, sir, Honorable MLA जी ने सप्लीमेंट्री जो पूछा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि Honorable MLA जो क्वेश्चन हम मुझे पूछ रहा है, वो भी एक टाइम में शिक्षा मंत्री था और उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज भी है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि जो हमारी यूजीसी की गाइडेंस के हिसाब से हमने इस साल जो ऑडिटोरियम चाहिए, प्ले ग्राउंड चाहिए, उसने हमने धनराशि रखा है। और रही बात हमारी जो प्रिंसिपल की जो वहाँ स्टेशन में नहीं रखता बोल के जो बता रहा है, अगर हमें कोई रिपोर्ट मिल रहा है कि क्योंकि ही इज इंचार्ज प्रिंसिपल, उसके लिए जब अगर वो नहीं रहेगा तो सर इंचार्ज प्रिंसिपल को हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। Question 27.
Sri Tarin Dakpe. Honorable Speaker, sir. Magister question number 27. Here I have seen that Honorable Minister, he has already given the reply. My supplementary question is that when we talk of priest, जो monk, उसका बोलने से आपका जो department itself is a little bit different. Indigenous appears, indigenous culture. When we talk of priest, we talk of faith. Indigenous faith and culture, वो appears होना चाहिए, ये जो है meaning. बहुत controversial, लेकिन मेरा ये अगस्त हाउस से स्पीकर सर आपका माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, ये डिपार्टमेंट को इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अपियर्स वो होना है. यहाँ में इंडिजिनस अपियर्स, इंडिजिनस कल्चर मीनिंग नहीं होता है तो डिफरेंस होता है. तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इट शुड बी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अपियर्स. सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज दैट हमने आपका जो गांव बुढ़ा का अपॉइंटमेंट होता है ये बंगाल एक्ट का हिसाब से, गांव बुढ़ा में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको कैसा सिलेक्शन करें क्या करें. अब जो है फर्स्ट जो है हमको गाइडलाइन होना पड़ेगा whom to select as priest. प्रीस्ट जो होता है आपका गॉड गिफ्ट वाला होता है, जस्ट तब एरे गए तो प्रीस्ट नहीं बन सकता है, कि उसका जो टर्निंग है इट कम्स फ्रॉम हिज ओन, ये जो भगवान जो गिफ्ट देते हैं. इसके लिए व्हेन यू आर गिविंग ऑनरेरियम 950 जो दे रहा है पर मंथ, उसका एक गाइडलाइंस भी होना है हमारा गवर्नमेंट का तरफ से, हाउ टू सेलेक्ट दी प्रीस्ट. उसके बाद उसका क्या मेथोडोलॉजी प्रीस्ट का हम लोगों का इसलिए ऑनरेरियम देने के लिए बोल रहा है कि गांव का लोग गरीब आदमी है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू, वो गांव बड़ा जो प्रीस्ट का ऑनरेरियम होता है देने नहीं सकता है. तो उसके लिए एक मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ा, हाउ टू सेलेक्ट प्रीस्ट जो है, और एक गाइडलाइन भी होना है बिफोर. ये डीसी लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ, ये तो अपॉइंटमेंट देने के बाद ही ऑनरेरियम मिलेगा, तो उसका सिलेक्शन रियलिस्टिक में वो जो प्रीस्ट उसका गॉड गिफ्ट वाला होना चाहिए. ये मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दो. थैंक यू वेरी मच. Honorable Speaker, sir, is sir question number 27 by Sri Taring Dakpe, Honorable MLA. The reply has been laid in the House. सर हमने प्रेस के लिए मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री एंड माननीय डिप्टी सीएम चौनेमन सर को बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये पहली इतिहास होगा कि हमारे अरुणाचल के लिए जो प्रेस के लिए जो अपने कल्चर एंड फेथ को बचाने के लिए जो ऑनरेरियम दे रहा है सरकार की तरफ से सैंक्शन किया है. इसलिए आज हमारे अरुणाचल में हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट में यानी जो इंडिजिनस फेथ इंडिजिनस कल्चर को विश्वास करके प्रीस्ट है, उसमें 2571 प्रीस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और उसको ऑनरेरियम जो 950 रुपीज़ करके पर मंथ आ रहा है. तो इस साल ये मार्च से हमारे ये सैलरी भी हम ऑनरेरियम को हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम डीसी के तरफ से देते हैं और डीसी डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट इंडिजिनस अफेयर्स में ऑलरेडी कौन प्रीस्ट बनेगा कैसे प्रीस्ट बनेगा ऑलरेडी हम लोग ने गाइडलाइन इशू किया हुआ है. और गाइडलाइन के तहत अपने क्योंकि प्रीस्ट को तो सब जानते हैं, हर गांव में जानता है, बच्चे बच्चे जानता है कि कौन प्रीस्ट है, लेकिन उसके लिए भी प्रीस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सर्कल ऑफिसर को हमारे इफ्साब के जो इंडिजिनस फेथ कल्चर सोसाइटी के लोग हैं उसको एनजीओ को ऐसे इन्वॉल्व करके प्रीस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है. इसलिए इसमें कोई तरह भी मतलब ये डुप्लीकेसी होने के चांस नहीं है. जितने भी लोग हैं उसको बाकायदा उनको जो डिस्ट्रिक्ट से डीसी से उसको आई कार्ड दिया जाएगा कि वो प्रेस को ये प्रेस है बोल के. उसी प्रकार से हमको रिकॉर्ड में जितने भी प्रेस है उसका हमारा डिपार्टमेंट में भी उसका डाटा रहेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में डाटा रहेगा. थैंक यू. Start question number 41, Sri Tapuk Taku. Thank you, Speaker sir. My question number 41. Sir replied by like this. 550 habitations are connected by
AWR, 886 habitations connected by FWR, BT under progress. Now, 948 villagers are not eligible under PMJSY program. My supplement question is like this: 948 विलेज ये क्या एलिजिबल जब नहीं है उसको एलिजिबल करने के लिए आपका क्या रेमेडीज जो टेकअप कर रहा है, स्टेप दे रहा है? ये सेंट्रल का प्रोग्राम है आपका, स्टेट गवर्नमेंट से भी पॉलिसी इसमें अभी तक टेकअप नहीं बोला है, तो उसके लिए आप क्या 948 विलेज अनकनेक्टेड रहेगा ना, उसका कनेक्ट करने के लिए आपका क्या स्टेप है? Honorable Speaker, sir, Honorable Member तापुक जी का आंसर दे चुका है। अभी जो उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का ये है 948 नोट एलिजिबल PMJSY में उसका क्राइटेरिया है सर। पहले शुरुआत में था 1000 पॉपुलेशन का अनकनेक्टेड विलेज प्लस 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन वाज 500 पॉपुलेशन होना चाहिए। थर्ड था 250 होना चाहिए। उसका बाद में हम लोग जो बात किया है कि अरुणाचल में तो ऐसे पॉपुलेशन देखने से तो कम होगा, लेकिन जोग्राफिकली बहुत वास्ट है, इसलिए बात करके अभी जो CM साहब से लेके यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से भी बात किया, तो अभी देख रहा है कि उसका कंसिडरेशन होना चाहिए। PMJSY 1, 2 तो अभी चल रहा है, कंप्लीट होने का बात चल रहा है, तो PMJSY 3 का जो अपग्रेडेशन था छोटा मोटा, उसका फैसिलिटी मैपिंग वगैरह करके अभी ऑडिट चल रहा है, उसका DPR बना के देंगे तो सैंक्शन होगा और काम शुरू करेगा। अभी जो एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है उसका भी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन में है। आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग इट अप विद द यूनियन गवर्नमेंट। थैंक यू सर। I have a supplementary, sir. I have a supplementary, sir. Speaker, sir. Please Sir, call your name. The Honorable Minister had said that there is no such state policy to establish connectivity to the villages which were not eligible under PMGSY. So my question is that there are hundreds of villages which are yet to be connected by routes, and then since there are certain criteria on the basis of which the villages are identified for connectivity under PMGSY. So I would like to ask the Honorable Minister whether the government can contemplate or think in terms of connecting those unconnected villages but not covered under PMGSY. Thank you. Honorable Speaker, sir, जैसे मैंने बताया है, ये जो एलिजिबल नहीं हुआ पॉपुलेशन का अनुसार वो तो बात चल रहा है, तो बाद में PMJSY 4 वो आने का भी बात है। मे बी आफ्टर completion of this PMJSY 1 and 2 and the PMJSY 3 ये खत्म होने के बाद में होगा। Let us expect it in the PMJSY 4. Thank you, sir. I have received a request for leave of absence from Sri Tupke Bagra and I have allowed it. Now we will take up 0-hour discussion. Honorable Member Sri Wangling Dwangdan may initiate the discussion on filing of illegal timbers in Deomali. Thank you, Speaker, sir, for permitting me to take part in the 0-hour discussion. On the subject of illegal felling of trees under Deomali Forest Division. Before I start, I would like to go with a quote in regard to the matter of forests. The silencing of the rainforest is a double deforestation, not only of trees, but a deforestation of the mind, music, and knowledge.
quoted by J. Griffith, a renowned British writer and author. Illegal felling of timber in Diomali, Forest Division in Tirap district, is going on in a very drastic momentum. Now, as we all know, illegal logging is a global problem with significant negative economic and social impact. In economic terms, illegal logging results in loss of revenue and other benefits in environment terms associated with deforestation, climate change, and loss of biodiversity. From the year 2001 to 2020, Arunachal has lost 222,000 hectares of forest cover, equivalent to 3.5% decrease in tree cover since 2000, and 116 metric ton of CO2 emissions. Arunachal is one of the top 5 regions of the country as far as tree cover loss is concerned from the year 2001 to 2020. Deputy Speaker, sir, I would like to concentrate on the Diomali division. But then, along with it, some examples of illegal felling of timber in other parts of the state has also to be brought to focus. Illegal felling and smuggling of care trees, variable care trees, Acacia katichu, in Lohit district in the year 2020, August 12, caused a huge loss to the state exchequer. May 2020, the illegal mafia almost stripped the hornbill habitat in the Papum Pare Reserve and Tiger Reserve. The RD Students Union called for a halt to the massive illegal felling in the wildlife and the reserve forest regions of that area. Diomali saw a significant number in this illegal felling of timber. From April 8, 2021 to 4th January 2022, this is only a tip of the iceberg, Deputy Speaker, sir. 125 logs equivalent to 82.734 cubic meters was seized. In terms of money, it was 8,18,171. From January 11th, 2022 to 16 January 2022, 898 logs equivalent to 506.434 cubic meters was seized. That, in money terms, was 41,99,154. A total amount of 1,022 logs was seized from the Diomali Forest Division areas, equivalent to 589.168 cubic meters of log. That in terms, monetary terms,
amounted to 50 lakhs 17,000. Now an amount of 50 lakhs of timber was seized in that particular time. See the amount of loss that is being borne by the state exchequer in such illegal activities from one particular division. If you take the overall view of the state as a whole, I cannot say how much the amount will tantamount to. So these are matters of serious concern. If we need to have a balanced ecological system and to counter the climate change, that is so important and taking the concern of every right-thinking people in the world. So this is a deep concern for all of our people. Now, these are just the samples of what the illegal activities in the forests are concerned. And this is also taking a very dangerous turn, particularly in the Diamari Forest Division, including my area of Border Reserve Forest. On many occasions, timber smugglers encountered the Assam Police Forest Protection Force. And there were firings on occasions between these two groups, on 3 or 4 occasions. Now this will change into a very dangerous trend, which may make the situation even more critical, leading to problems of Assam Arunachal. Now for a handful of smugglers who are engaged in their own activities for their own selfish motives of illegal felling and timber smuggling, the state of Arunachal and Assam should not come to crash. So the major concern of the department, also of the government of Arunachal, is how to control these illegal activities. Suggestions by the National Green Tribunal in a case related to some illegal activities concerning in some other forest division stated that the first step the state government should initiate is to fill the vacant posts of the forest personnel. And also, secondly, consider taking urgent measures and also depute retired personnel, mostly from the security agencies. These are some initiatives that can be taken by the government. And how to further strengthen the process of checking these illegal activities is, as I have stated, strengthening of the manpower. Secondly, better technologies like GPS-fitted trucks for movement of logs, which I presume the DC Changlong has initiated. It's a very pioneering activity and service, I feel. And also, the main concern and the main reason for any person to undertake illegal activities is where the finished raw products accumulate. And that is the WBIs, the wood-based industries. The wood-based industries, although they may deny the fact that we have not carried out any illegal activities, they are speaking far from the truth. That is hardly the fact. It is because of them, the consumers of the raw materials, that this illegal activities is becoming fruitful. In what way can we check the activities of such WBIs? The department must have serious concern
in this matter and take serious initiative to check this. Every 6 months, a thorough checking should be initiated in the mills, the WBIs of those particular areas. And moreover, there are no WBI areas in Tirap district. So where are the raw materials provided to? Either outside the state or some other districts. So illegal activities are taking place in my in my district. So it's very important that checks must be initiated. Some mills were closed down, but I understand that after some initial report that it had been reopened, and after a lull in the movement for some time, they will again start with full-scale activity. The process goes on, never-ending process of illegalities. Do we like it? Do we want it to continue? And tomorrow they'll say that no, there was no illegal felling. There is no proof. This is the proof. There are pictures of illegal logging. If necessary, I will place it to you. These are the photographs of all the illegal activities that have been taken, all the illegal logs that has been seized. It's a very serious concern. Not only for us, for the survival of our generation, the next generation, for the survival of the state. When everybody is concerned of the ecological imbalance that is being perpetuated. So I feel a serious intention from the government must be there. Moreover, besides these illegal activities, I duly appreciate the steps taken by Honorable Minister of Forests and Environment and Climate Change, that his intention and purpose is in the correct perspective. How one may say so, his love for nature and all that God-gifted semblings that are there in this universe, indicated by his airgun surrender abhiyan, which has been reflected by the Man Ki Baat of our Prime Minister. These are steps, little steps, but we should take one step at a time. So it shows his attitude that yes, the birds and the creatures and the animals are also ours. So we should let it survive. I would also like to reflect here in my argument in 0-hour discussion. Please go one more step further. Along with the airgun surrender ceremony, now please initiate a power chainsaw surrender abhiyan. All the power chainsaws in the state should be surrendered voluntarily. Then the illegal activities, felling of illegal trees, may subside to some extent. And a message will go to the people that we are indeed interested in preserving our heritage. I would call it heritage. The forests are our heritage. So we have to preserve it. And before I conclude, let me quote Mahatma Gandhi's saying, which he reflected on the environment activities, where he says, what we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. It's a very challenging quote, which is very important for the moment, and I feel initiation must be there,
to control these illegal activities. Thank you, Deputy Speakers. Thank you. Now, the Minister of Environment and Forests may make a statement on the matter raised by the honorable members. Honorable Deputy Speaker Sir, ये Honorable Senior Member वांगलिंग लोंगडिंग जी का जो 0 आवर्स जो डिस्कशन लाया, ये बहुत ही अच्छा और अच्छा डिस्कशन है। एंड वो बारीकी से बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किस प्रकार से जो इलीगल टिम्बर ऑपरेशन फाइलिंग हो रहा है और उसको कैसा रोका जाए। ये बात सच है कि हम जो ट्राइबल स्टेट, जो अपना अरुणाचल की जितने भी हम जो जनजाति है, हमारे अधिकतर सदियों से हम अपना मदर नेचर के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर हर चीज़ में हम डिपेंड करते आए हैं। हर चीज़ अरुणाचल प्रदेश में हम फॉरेस्ट के ऊपर ही हम डिपेंड करके आए। लेकिन आपने जो जिस प्रकार से जो बताया कि जो टिम्बर इलीगल ऑपरेशन है, वो सरकार उसके लिए क्या कदम उतारा है और क्या कर रहे हैं। यस, वी नो कि इन एशिया, पूरे एशिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरेज कहाँ बोलेगा तू? इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज बोलेगा तू? इंडिया। भारत में कहाँ है बोलेगा तू? नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है बोलेगा तू? अरुणाचल प्रदेश। इन अरुणाचल प्रदेश वी हैव 83,743 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवरेज एरिया एंड 80% अरुणाचल प्रदेश में अभी भी 80% हम फॉरेस्ट का हमारा जो रिजर्व है, जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया अभी भी 80%, जबकि जो भारत में देश में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवरेज और फॉरेस्ट रिजर्व हमारा प्रदेश में है, जिसमें से अपना जो बायोडाइवर्सिटी में सदन को, ऑनरेबल मेंबर्स में सदन को, ये थ्रू यू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरा विश्व भर में अरुणाचल प्रदेश जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 12 नंबर पे है। और रिसेंटली अब हम लोग पाके डिक्लेरेशन में ऑनरेबल सीएम, हम लोगों का वहाँ में पाके डिक्लेरेशन में जहाँ कैबिनेट मीटिंग हुआ, वहाँ में भी हम लोगों ने 5 धारा का कल ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने कल स्पीच में, बजट स्पीच में मेंशन किया कि अपना जो देश है पूरे विश्व भर में अगर कुछ मदर नेचर के लिए कुछ करे, क्लाइमेट चेंजेस का ऊपर अगर कुछ करे, तो सारा विश्व, पूरा दुनिया भारत की तरफ दिखता है। अरे भारत कुछ करे, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो अपना देश में जो नेचर को हम जो प्रिजर्व करके रखा है, जो मदर नेचर को हम जो भारत में रखा है, और नॉर्थ ईस्ट में खास करके अपना अरुणाचल प्रदेश में, और बाकी देश में और बाकी प्रदेश में नहीं है। जो कार्बन सिंक है, जिस प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में, पूरा देश भर में, विश्व भर में हम ऑक्सीजन के काम करते हैं, पेपरा के हम ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन पूरा विश्व भर में। तो आपने जो ऑनरेबल मेंबर ने जो आपने जो डिस्कशन लाया, ये बहुत ही हम सब पूरा प्रदेश के लोग इस सदन में, इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में सब ऑनरेबल मेंबर्स एंड पूरा प्रदेश के जनता, हम सब गंभीरता से उसको हम सोचना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारा विभाग ही
इसको इलीगल ऑपरेशन को, टिम्बर ऑपरेशन को और इलीगल को हम सब सरकार ही रोकना, वो नहीं। अगर कहीं ऐसा हो रहा है, सरकार का तरफ से जो मिशनरी है, जिस प्रकार से जो मिशनरी लगाना चाहिए, जो हमारा जो स्कॉट है, हमारा पेट्रोलिंग है, वो हमेशा चलते रहता है। आपने सही बताया कि जहां जहां में जो टिम्बर इलीगल ऑपरेशन हुआ, जो हो रहा है, अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ऐसा नहीं छोड़ा कि कहीं हमने एक्शन नहीं लिया हो। डिपार्टमेंट में कहीं भी, कोई भी जगह में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं जिस प्रकार से इलीगल और टिम्बर ऑपरेशन करता हुआ जब मिलता है, हम जरूर उसको सीज करते हैं, जरूर एक्शन लेते हैं। ये आपने जो ये विषय बताया कि ये जो है 2000, इसका जो शुरू हुआ कि 2022 जनवरी 2019 से, ये आपने बात सही कहा कि जो अपना कैनन तलक पेंटी एक ब्लेस है, जिसमें जो हमारा पड़ोसी राज्य के असम के बाउंड्री में है, जिसमें हमारा जो दिरक रिवर है, दिरक रिवर जो है वो जस्ट हमारा बाउंड्री के सामने है। हाँ, ये बात आपने बोला कि बताया कि इलीगल टिम्बर ऑपरेशन कहीं से कहीं ना कहीं से हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है वहाँ में। ये 2018 में, 2017, 18 और 2019 और 2020 जैसे जैसे जहाँ में जो ऑपरेशन मिलते, जो इलीगल ऑपरेशन को हम डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ में पेट्रोलिंग किया, वहाँ का EAC का साथ, आपका जो दियोमाली का ADC का, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का साथ, जहाँ में हम लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, वहाँ जितने भी जो ज्वाइंट ऑपरेशन में मिला, अभी तक आपको मैं आंकड़ा भी बताना चाहता हूं कि 898 लॉक्स, जो 506.434 CM अभी तक हम लोगों ने डिपार्टमेंट में सीज किया है। और उसके अंदर अभी भी 24 आवर्स, रात को भी हमारा जो डिपार्टमेंट का जो स्क्वाड है पेट्रोलिंग, वो रात को भी अभी भी उसको पेट्रोलिंग चल रहा है। मैं आप लोग को सरकार की, विभाग की तरफ से, गवर्नमेंट की ओर से मैं वो सभी ऑनरेबल को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना जो पेड़ पौधा है, अपना जो पेड़ पौधा है, जो ट्रीज है, ये हमारा इस प्रदेश का बोल के नहीं, ये पूरा विश्व भर का एक ऑक्सीजन है। ये हम पेपरा का रूप में अरुणाचल प्रदेश काम करते हैं। जो इलीगल फाइलिंग हो रहा है, जो टिम्बर इलीगल ऑपरेशन हो रहा है, इसको हमने कई जगह में, हर जगह में 2-4 लोगों को रजिस्टर भी किया केस, उसको सीज किया। डिपार्टमेंट का तरफ से जो एक्शन लेना हम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को जो ऑनरेबल्स लोग, आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका जो बरदोरिया और देवमाली जो एरिया है, वहां का पंचायत, वहां का जनता, वहां का पब्लिक भी हमारे सरकार को साथ दे, डिपार्टमेंट को साथ दे, ताकि जो ऑपरेशन, इलीगल ऑपरेशन कर रहा वो भी हमारा साथ देकर पेट्रोलिंग में, सीज करने में वो साथ दे। ये बहुत ही मैं इस सदन से ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, अपना जो पड़ोसी वाला राज्य को, उनसे भी कुछ लोग वहां एकदम हमारा बॉर्डर के सामने, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के सामने आकर कुछ इलीगली टिम्बर ऑपरेशन करके जाते हैं। और ऐसा 898 अभी तक हम लोगों ने पकड़ा है। साथ में उतना ही नहीं, साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, आपने अभी बताया कि जो आपको ये भी, जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री है,
वहां में जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री है उसको भी हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि वहां में कहीं वो इलीगल ऑपरेशन वाला कहीं वहां वुड बेस्ड इंडस्ट्री में कहीं वहां आपका लॉक्स ना दे दे, उसी को ध्यान में रखते हुए उसको टेम्पोरली तब आप जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री है उसको भी हम लोगों ने सस्पेंड करके रखा हुआ है। और वहां में अकॉर्डिंगली जितना जो सरकार का तरफ से जो एलोकेशन है उस हिसाब से पूरा हमारा डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वो पूरा उसको स्कैनिंग करा कि कितना गवर्नमेंट का तरफ से जो एलोकेशन दिया है अकॉर्डिंगली वुड बेस्ड इंडस्ट्री में भी वहां में मिल में दिया जाएगा। इस प्रकार का पूरा डिपार्टमेंट की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से पूरा हम एक्शन ले रहा है। और साथ में मैं ऑनरेबल मेंबर्स को मैं ये सदन में ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इसको अभी तक हम लोग मिलकर पूरा अरुणाचल प्रदेश का नेचर, अपना जो मदर नेचर है, इसको हम लोग बचाने के लिए सभी हम सब एकजुट होकर उसको योगदान करना होगा, काम करना होगा। इसलिए आने वाला में अगर इस प्रकार का कहीं भी अगर इलीगल टिम्बर ऑपरेशन होता है उसका एक्शन जिस प्रकार से जो हमने लिया है, जिस प्रकार से डिपार्टमेंट ने जो ले रहा है, जिस प्रकार से जो सीज कर रहा है, और उतना ही नहीं हैंड सोइंग मशीन आप लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स थ्रू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, इस बार जो एयर गन एंड गन सरेंडर अभियान में ऐसा कई लोग हैं, बहुत सा ऐसा लोग है जो हैंड सोइंग मशीन को भी सरेंडर किया, इवन वो नेट को भी सरेंडर किया। मैं आप सब से सदन में मैं विनती करना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के जो मंदिर है, पवित्र मंदिर से आप सभी जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में इसको हम सब जितना हो सके गन और एयर गन, साथ में हैंड सोइंग मशीन, नेट को भी सरेंडर करने का हम सब मिलकर उसको कैंपिंग करें, ताकि वो हम ऐसा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच है कि टीम अरुणाचल का जो मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि अरुणाचल प्रदेश को ऐसा प्रदेश हम लोग मिलकर बनाना है कि हम लोग एयर गन फ्री स्टेट, एयर गन फ्री स्टेट और हैंड सोइंग फ्री स्टेट हम लोग को मिलकर बनाना है। तो मैं आपको आश्वासन में सदन को मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग इस विषय में गंभीरता से ले रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को क्लियर, हम लोगों ने बैठक मीटिंग करके हमने डिस्कस किया कि हमारा जो काउंटर पार्ट, सामने वाला जो बाउंड्री का जितना भी ऑफिसर्स है, असम का जो डीएफओ है, पीसीसीएफ है, सीएफ है, उसके साथ हम लोग जल्दी सा एक कोऑर्डिनेशन एक मीटिंग बैठने वाला है, ताकि असम का लोग भी, हमारा बाउंड्री में वहां का लोग भी वो इलीगल टिम्बर ऑपरेशन ना हो। तो इस प्रकार का जो सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो ये फ्यू वर्ड के साथ ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. Item number 3, short duration discussion. Sri Ninong Ering may make a short statement on the matter regarding the RTI guidelines. Honorable Deputy Speaker, the subject is such that even though it is short duration discussion, it cannot be short, because this does not concern with only the state of Arunachal Pradesh, but it is a pan-India situation in which we have brought. Of course, when we had brought the RTI Act in 2005, we had brought that there should be transparency and accountability, and also that it should give timely government information to the people who apply for the RTI. I stand in this August House not because that I would like to evolve some guidelines for punishing those frivolous applications or to amend the RTI which is not
within the purview of this August House. But still, it is my feeling that the RTI activists that are taking part in Arunachal Pradesh on those issues, also my request with due regard and due respects to the commissioners in how we are dealing with the government departments, and especially the constructing departments, where the main objections come from. Several pleas have been filed in the Supreme Court seeking to curb the misuse of Right to Information Act. One of the main prayers in those pleas are the additional requirement of local standing in the RTI applications, and there should be strict scrutiny of the intention of applicants seeking information. Such pleas are basically to curb Article 19, Clause 1, Subclause A of the Constitution, which amounts to seeking an amendment of the Constitution. A powerful narrative is being built around the misuse of RTI. Those in position of power are indeed upset with the citizen empowerment that this act has enabled. The RTI Act has allowed citizens to question arbitrariness and corruption and demand accountability. And this is something the powerful do not enjoy. The desire to truncate people's right to information displays the antagonism between those in power and the right of citizens to be empowered. Many government officials are now saying that citizens only seek information about matters that are connected with them, and felt that the purpose of object of RTI Act is defeated due to frivolous applications. Generally, the PIO would refer to most applications whom regularly file RTI applications as blackmailers, harassers, and people who misuse the Act. However, in reality, there are many RTI applications can be broadly divided into 4 categories. The first category, those who file RTI applications with the hope of exposing corruption, arbitrariness, or poor governance. And the second part is those who file RTI applications repeatedly to correct a wrong which they perceive have been done today. And the third, those who use RTI to blackmail people. This category largely targets illegal buildings, mining activities, or some other activity that runs afoul in the law. And the fourth category is those who use this to harass a public official with the intent to get some undue favor. Now, the last 2 categories very clearly comprise much fewer than 5% of the total RTI application. But unfortunately, when it comes to Arunachal Pradesh, the percentage is very high. And this we will have to curb with the moral support of all the citizens, the government, and also us legislators, where we have to take a stand that development works should not be stopped. Now the question is how blackmailers operate. As per the government officers, RTI blackmail threatens an illegal action which exposure and thereby extorts money. Why society has such touching empathy for the victims of the third category of RTI applicants? After all, these people have committed illegal acts. And the fourth category of applicants who seek undue favor must certainly be discouraged, and information commissioners will have to take some action on that. The constant refrain of some people who highlight the misuse of RTI Act is nothing but an attempt to muzzle the citizens' fundamental rights to transparency and information. The freedom of speech expression, which is covered under Article 19, Clause 1, Subclause A, has been expanding over time. The reasonable restrictions that can be imposed on the freedom of expression are found in Article 19, Clause 2. These restrictions also apply to the right to free speech and publicizing. The exceptions of the RTI Act cover these logically curbs on freedom of speech, publishing, and information must be consistent with each other. One of the most problematic statements by the Supreme Court was in the Aditya Bandyopadhyay judgment. In it, the court ruled that RTI should not be allowed to be misused or abused or become a tool to obstruct the national development and integration or to destroy the peace and tranquility and harmony among
This may be appropriate for terrorists, but not for citizens who simply use information. It is unfortunate that the public authorities were not castigated for flouting the obligation to ensure that information available suo motu under Section 4 of the RTI Act to the public, and such citizens are upbraided for using this fundamental right. The powerful find that RTI Act upsetting, for it gives citizens the right to question their arrogance. That is why they are trying to discredit this law by talking about misuse. Many eminent persons berate the RTI Act and say it should be deleted. There is widespread acceptance that statements, books and works of literature and art are covered by Article 19, Section 1, Subclause A of the Constitution, and they may curb, meets with self and stiff resistance. However, there is no murmur when users of RTI label deprecatingly, even though it is covered by the same article of the Constitution. Everyone with power appears to think, I would risk my life for your right to express your views. Do not agree with you if you use RTI in a manner I do not approve. An information seeker can only ask for what is on the record if the records expose wrongdoing. It is silly to blame the RTI Act or citizens who use this law. This would be like blaming media for some scams unearthed by it. India is rated among the top 5 countries in terms of legal provisions, but ranks poorly in terms of implementation of these laws. The only systematic large-scale survey of RTI applications was undertaken by the Research Assessment and Analysis Group, which found that less than 1% of the RTI applications could be termed frivolous. Now, there is a need to evolve guidelines to stop misuse of RTI law. There are people who put on their letterheads RTI consultant, or they call themselves RTI activist. Now, this is a question, a big question to ponder upon. Is that an occupation? Is RTI activist an occupation? There may be an axe to grind beyond RTI request. Therefore, it is important to find a way to stop the abuse of RTI Act. The Apex Court, while hearing a plea seeking to curb the abuse of RTI by frivolous applications, said that the huge flow of applications RTI is a serious problem. The Supreme Court further stated that the right to information cannot be unrivaled right, and said there is a need to stop misuse and criminal intimidation by those people who are not connected with the issues raised. People who are no way connected to an issue file RTI is sometimes amount to criminal intimidation, which is a nice word for blackmail. We are not against the right to information, but there is a need for guidelines. It cannot be unrivaled again, said by a bench comprising of Chief Justice S.A. Bobde and Justice B.R. Gawal and Suryakant. The Apex Court made the remarks while hearing a plea of filing of vacancies in information commissioners in the Central Information Commission and the State Information Commissions. Calling the huge flow of RTI applications a serious problem, the bench said, though it is not opposed to the transparency law, there was a need to evolve a mechanism to ensure that only affected or concerned person take recourse to the legislation. The Chief Justice of India, while sharing his personal experience as a judge of the Bombay High Court, said that an official once told him that functioning in the Maharashtra Mantralaya, in the ministry in Maharashtra, was paralyzed because of queries under RTI. Lawyer Prashant Bhuchan, appearing for activist Andali Bhajwaj, while referring to various Apex Court judgments, stated that the public had a fundamental right to know an information seeker does not need to have a locus or personal interest in seeking information under RTI. Citing the examples of electoral bond schemes and award of a government contract, Bhuchan said, unconnected persons can take recourse of the RTI in seeking information. In such cases, no political party would like the scrutiny, and in latter, a loser in the bidding process will have the fear of getting blacklisted. The fear of action from the people in power prevents many connected persons from filing plea under RTI. However, the bench made a remark that let somebody in the business do this. One can understand if a connected person files an application under RTI, it cannot be
the case anybody seeking anything, it added that there is some kind of filter and some guidelines, the bench further said. Now, Honorable Deputy Speaker, sir, the reason why I have brought this for discussion, and I hope that most of my friends will participate, it will be kind of a knowledge to all of us that what actually is happening in our state of Arunachal Pradesh. Sir, today is the Ides of March. It's 15th of March. It is the Ides of March. Most of us must be knowing that a soothsayer had gone to Caesar and said, beware the Ides of March. And in the Senate, when Caius Cassius and Brutus stabbed Julius Caesar, he had said, et tu Brutu, means you to Brutus. So the story goes that when the body of Julius Caesar was laid to rest in front of the public, and the public said, and Mark Antony came forward and said, friends, Romans and countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. Brutus says that Caesar is ambitious and Brutus is an honorable man. But how he converted the public in saying that Caesar wanted to be an emperor, but by his elocution, how Mark Antony made the people realize and shout for the will. So that is the locus standi now. Who is Caesar? Caesar is the RTI Act. Who is Brutus and Caius Cassius? They are the fraudulent RTI activists. Who are then the Mark Antony? Mark Antony is the people who are really determined that yes, we want to bring transparency, we want to know the knowledge from the government, and the commissioners are the soothsayers who guide, who give decisions, who lead us. So, Honorable Deputy Speaker, sir, whatever good we had intended, it is our government, the Congress government which had brought this act, so that there would be transparency, there would be coordination, there would be less corruption, and that was the intention of the government. But gradually, we have to make this act more strong, but it does not mean that the RTI, the right to information, is turned into a right of income. So it is very unfortunate, because the government has to go on. Works cannot be stopped. Now, what is the way forward? How do we check it? Of course, we cannot bring some provisions, nor we can amend the constitution. If at all it has to be amended, it has to be amended in Parliament. But we can have a say that where we are wrong and what have we done wrong. Because nowadays you will see that so many RTI applications are there. And investigations are there, so much stuff, waste of time and money. And after that, at the end of the day, you hear that they have withdrawn the case. Why have they withdrawn the case? So that comes under the third and fourth category of which I had mentioned. They are the Caius Cassius and they are the Brutus. With an intention that Caesar was a good man, but they had to stab him because through these means, ways and means. So at least there has to be a provision that if these are frivolous cases, if these applications are frivolous, the RTI activists, then they should be also punished. There has to be a law, because the law does not depict anything about punishment, about the frivolous applications, or there are no certain guidelines on that. So in this August House, I know there has to be some rectification, some training, and awareness of the provisions of the Act. I would, through your kind self, appeal to the Law Minister and also to Honorable Chief Minister that the officers of Arunachal Pradesh have to be at least trained what the RTI Act is. Either we are wrong, either our government officers are wrong,
And they fear these activists and just pay off the funds and pay off the money, which leads to more wrong. When you do a wrong, you cannot do a second wrong and try to save yourself. So, Honorable Deputy Speaker, I would request that through you, the government takes steps to give training to officers and awareness about the RTI Act. RTI Act, when somebody applies for an RTI, suddenly the officer is just, he becomes fearsome, or he is very much afraid. So we have to clear this doubt. We have to make them clear that we are a government, we are working for the people, and just an RTI Act cannot show the faults in you. If you have done the work properly, why should there be, that fear psychosis in you? So as, frankly speaking, sir, at the end I would just like to quote. Again, that is from the Merchant of Venice. I hold the world as the world, Rachinio, a stage where every man must play a part, and mine a sad one. I know I'll get a lot of criticism. I know I will get a lot of complaints from the RTI activists, or even from the commissioners. But somebody have to say a spade is a spade. I'll have to tell them that what is wrong is wrong. Now, through you, I would like to appeal to the House, the August House, that if there are feelings that yes, the RTI activists in one way or other are wrong, should also respond, so that I may also be protected from these kind of third or fourth category RTI activists. With these few words, sir, I thank you very much for allowing me to place this in the floor of the House. Now, honorable members, those who desire to take part in this discussion may do so. Anybody? Jini sir. Deputy Speaker, sir, through you, I would also like to participate to the zero-hour discussions put forward by our senior-most honorable members, Ninong Iring, sir. As learned honorable member has already pointed out so many things, I would like to also throw and take part in the discussions. The Right to Information Act was enacted by way of Parliament Act in 2005. It's called Citizens' Right to Information, which replaced the Freedom of Information Act 2002. Earlier, it was Information Act 2002, which was amended and enacted in the Parliament. It's generally the right to information rules under which any citizen who desires to obtain information under the Act should make an application to the PIO, Public Information Officer, to the area in which application is made, meaning thereby the information which they want to seek should write an application in clear word what type of information they want. If it is so, the PIO generally should give the information which the applicant is seeking for. And if the PIO desire to furnish the information, then they can take at least 1 month time. If not, within 15 days of time, they should deny that, saying that no, I cannot give this information. If the applicant is not satisfied, they can prepare an appeal to the higher authority. These articles, RTI Information Act is a fundamental rights
which has been enshrined under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. As you know, the RTI information or a constitution is not an absolute. It's a flexible sometimes. Therefore, under RTI Act, you cannot seek all information which you want. There is also certain reservations. Under RTI Information Act, the personal information which has no relation to the public authority or invasion to private individuals cannot be given to information. Like commercial confidence, trade secrets, or intellectual right of property cannot be given under the RTI Act. Be that as it may, it has been observed these days that in the state of Arunachal Pradesh, some people are trying to misuse the RTI Act for blackmailing the persons, officers, for which, while participating in this debate, discussions, I would also like to put some suggestions that if the cost of papers should rise to 10 rupees, then unnecessary RTI applicants may not come up, and then so that the RTI applicants, numbers of RTI applicants may also reduce. Otherwise, due to the RTI applicants, the officers are really harassing and they are not giving must unnecessarily submitting application and taking precious times of the officers. If the amount is raised to 2 rupees, 10 rupees, from 2 rupees, then at least the numbers of applicants may be reduced. That apart, I also feel that this RTI Act, though is fundamental rights, we should try to we should appoint some expert to study on this aspect in respect to Arunachal Pradesh. Though it is a state, this is a central act enacted in the parliament, then if possible, we also try to ponder on the rules and act by way of state amendments. Since my senior colleague has argued so many, discussed so many things on RTI Act, my simple suggestion is, let us, again I would like to remind it, here under RTI Act in the state and as well as in the union government's amendment, below poverty line applicants are also given free of cost. If we can this thing that no, people below poverty line, without, if with the below poverty line people apply the applicant, they are supplying the information free of cost. So these people are taking much keen to the RTI information. And after taking information, again they are disturbing the officers. I don't want to say that they are blackmailing because they have every right to take information, but it should be used in the right direction and in proper for getting information. And while participating in this house, I would also like to appeal to officer that why you people should succumb to the
blackmailers. So to avoid that, we should do our own work in right directions. And if we do good work, whatsoever they may be, they cannot blackmail us. And they cannot blackmail the officers. This word really, I don't support that. Some officers are saying that the people are misusing the RTI Act. This is their own right. They can do it. But until and unless you don't do your own work in the right part, certainly these people will try to blackmail. So to avoid that, the officers should also always keep in mind that everything should go on the right track. That apart, the RTI Act is really a good thing, which every citizens can take information from the authorities. Therefore, whatever my learned friend, my senior colleague has said, while supporting it, I conclude my debate. Thank you. No one to take participate. Then, oh, Jiket ako. Honorable Deputy Speaker, sir, हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मॉक किया है वो विस्तार से पूरा सदन में रखा है और इसका हमारा किंतोजीनी साहब ने बहुत एक्ट का ऊपर में डिस्कशन किया। मैं उस डिप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ जो है अरुणाचल में जैसे चल रहा है उस एक दो चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ आरटीआई का जहाँ हमको विश्वास है एज ए लेमैन, एज ए लेजिस्लेटर जी सब से भी जो भी देखा है कि जिसको विक्टिम फील कर रहा है, जिसको हमको तकलीफ हो रहा है इस स्कीम से या उस प्रोजेक्ट से या उस काम से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन सेक द इंफॉर्मेशन। लेकिन अरुणाचल में ऐसा हो रहा है कि यहाँ में ईस्टर्न वेस्टर्न एक आदमी ने पूरा डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट को करेक्शन करने के लिए जाता है ना क्या के लिए जाता है पता नहीं। जैसे यहाँ हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट से जैसे प्रोजेक्ट का सेंशन निकल गया, उसका पीछे पीछे पूरा डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है। उसको कोई विक्टिम ही नहीं है वो, ना वो स्कीम का ये भी एलिजिबिलिटी वो बेनिफिशियरी भी नहीं है। जो बेनिफिशियरी का एलिजिबल नहीं है तो विक्टिम भी नहीं हो सकता है। बट दे आर सीकिंग एवरीवेयर, कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में हर वो में डिवीजन में घूम रहा है। तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि ऑफिसर लोग आरटीआई का उसको प्रिपरेशन में भी अपना टाइम निकाल रहा है कि आरटीआई को देना है चलते रह जाता है। और जैसे अननेसेसरी चीज़ ऐसा हो रहा है कि उसको इग्नोर कर देता है तो कमीशन में चला जाता है, तो कमीशन उसको बुला देता है। तो यंक्यूंग से मान लो यंक्यूंग से तवांग से अगर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को या बुला देता है, देन दे टेक टाइम, तो लॉस हो रहा है। कि ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम लोग को कंट्रोल करना सच में बहुत ज़रूरी है कि एक कौन सा आदमी किस कैटेगरी में कहा है इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हाँ सर, सेम डिस्ट्रिक्ट का आदमी होता, सेम डिस्ट्रिक्ट में वो है, वो कुछ कर लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग कवर करना सच में प्रॉब्लम दे रहा है। ये है नंबर 1। नंबर 2, इंफॉर्मेशन अगर दे भी देता है तो लोग क्या करता है कि वॉल्यूम को देख के इंफॉर्मेशन ऐसे मांगता है कि 2 साल 3 साल का पूरा डिटेल चाहिए, तो उसको जेरोक्स करके देने से क्या करता है कि वो लोग कलेक्ट भी नहीं करता है। तो हमारा जो है डिवीजन डिपार्टमेंट का पैसा लॉस हो जाता है कि जेरोक्स में। तो इसलिए क्या करना है कि आई थिंक मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर पॉसिबिलिटी है तो ये एडवांस डिपॉजिट कर देना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन सीकर है पैसा को एडवांस देना है, जैसे हमारा प्रवेश स्पीकर बोला है, पी को भी इन्हेंस करा के एडवांस डिपॉजिट करेगा तो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। वॉल्यूम सही लगेगा तो वो लोग लेगा, नहीं लगेगा छोड़ देता है। अगर छोड़ने वाला का भी कुछ प्रोविजन है ही नहीं, उसको पनिशमेंट देना, क्या करना, ये करना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जैसे चाहा ऐसा, उसमें भी ऐसा है हमारा अपना ये में असेंबली में ये
मैंने बोलना चाहूँगा कि हमारा ही अपना गवर्नमेंट ऑफिसर लोग से आपस में लड़ाई में आरटीआई को भी मिसयूज कर रहा है। सच बोलने से आरटीआई एक्टिविस्ट को क्या पता है कि कौन सा क्लोज में क्या गलती हुआ। सबऑर्डिनेट आपस में ऑफिसर आपस में लड़ाई लड़के ये भी मिसयूज हो रहा है कि इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, तो ब्लैकमेलिंग वाला चीज़ आता है। अदरवाइज